Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I am going to share the active recruitments and the upcoming exam recruitments which we can expect in 2024. Starting with the active recruitments, you may already know about SEBI legal exam. The advance intimation is already out and the detailed advertisement is expected on 13th of April. Online application form भी 13th of April से start होगा. For legal, there are 5 vacancies and this is the eligibility. You can check out this. SEBI legal recruitment is the most famous and most weighted recruitment by law graduates who want a career in legal discipline as law officer in insurance, banking or regulatory body sector. Then the next one is IFSC, International Financial Services Center Authority. इसमें 2 vacancies हैं for assistant manager legal. ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एंड विल बी अप टू 21st of April. Check out this recruitment and fill the form. 21st April is the last date. Phase 1 online examination is expected in May और June and most probably अब आपके सभी एग्जाम्स इलेक्शंस के बाद होंगे. 4th of June को इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं, उसके बाद ही आपके सभी रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम्स होंगे. सो यू हैव अराउंड 2 months in hand, minimum 2 months in your hand to prepare for these exams. Give your best for these 2 months and from June, July onwards you will have many exams to appear for. You will have multiple recruitments. The next one is Oriental Insurance Company Limited. There are 20 vacancies. This is for administrative officer scale 1 in the legal discipline. In legal discipline यहाँ पर आपकी 20 vacancies हैं. Last date for online registration for this exam is 12th of April. 21st March से registration start हो गए थे. 12th of April is the last date. Exam is tentatively in May or June 2024. Again expect it to be in June only. Phase 1 mostly June में होंगे, कुछ exams के जुलाई में भी हो सकते हैं. Phase 2 उसके बाद होगा. It's better to make the best use of their time available in your hand. Then there is Bank of India recruitment. Bank of India recruitment is for scale 2 and scale 3 post. Scale 2 post के लिए 4 years का experience चाहिए. Scale 3 post के लिए 6 years का experience चाहिए. इस recruitment में काफ़ी अच्छी vacancies हैं. Scale 3 post में there are 31 vacancies and for scale 2 post 25 vacancies हैं. Age भी दी हुई है. बाकी eligibility आप recruitment में से check कर सकते हैं. Online registration 27th March को start हो गया था and last date for online registration is 10th of April. 10th of April को ख़त्म हो जाएगा. कुछ ही दिन रह गए हैं. अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, एग्ज़ाम बाद में होगा, जून में ही होगा या उसके भी बाद. अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए. ओरिएंटल इंश्योरेंस और बैंक ऑफ इंडिया के लिए हार्डली 5-7 दिन ही बचे हैं. These are the active recruitments right now and multiple recruitments have been announced over the past years. These are all the exams, all the recruitments that have been announced over the past years. मैंने पहले भी आपको ये दिखाया हुआ है. अब यहाँ पर मार्च में 4 रिक्रूटमेंट्स ऐड हो गई. सेबी, IFSC, OICL एंड बैंक ऑफ इंडिया. आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्स जनरली आते हैं. Now let's talk about upcoming recruitments. According to my understanding, these are the recruitments, few recruitments which you can expect. IBPS SO law आता ही है. IBPS का tentative calendar already out हो चुका है. IBPS SO law usually is announced in the month of August. आपका prelims का exam November में होता है. IBPS RRB scale 2 law, this requires experience. Usually इसकी announcement मई में होती है, हो सकता है इस बार जून में चली जाए. ECGC PO लीगल जनरली ये अप्रैल मई में आता है, इस बार हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए. RBI ग्रेड बी लीगल अगेन मई जून में ही आता है, 1-2 महीने आगे हो सकता है. IRDA PFRDA legal, these recruitments were conducted in 2022. Few vacancies may come for these organizations this year. Then Coal India MT legal and HPCL law, इनकी vacancies हर साल आती हैं somewhere around July-September. These 2 recruitments have not been conducted for quite some time. तो हम इनको भी देख सकते हैं. इसके अलावा और भी काफ़ी recruitments हैं जो टाइम टू टाइम पता चलती हैं. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अनाउंस करते हैं. You can target all these exams. And here if you need any form of guidance, any form of preparation material, you can check out our courses. We have individual courses for all of these exams. And also we have a comprehensive course called Mega B Legal, which will help you in the preparation of various law exams which you see upcoming in the next 1 year. तो अगले 1 साल तक कोई भी एग्जाम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज, PSUs, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स
कोई भी अनाउंस होंगी, उन सब की प्रिपरेशन मेगा बी लीगल कोर्स के थ्रू की जा सकती है. So if you have any queries, any doubts, you can reach out to us on this number. You can know more about the Mega B Legal online course. You can also write your queries in the comment below. We at iExamB help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.